Good evening, everybody. Our Chief Justice of India is on the way and he will be reaching here very shortly. And so is our Honorable Chief Minister is on the way. And along with both of them, हमारे जो बाकी के गणमान्य अतिथि हैं वो भी कुछ ही समय में हमारे बीच उपस्थित होंगे. तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा आप अपना स्थान ग्रहण करें. धन्यवाद.
Check. Check. As you see, the dignitaries and Honorable Chief Justice of Rajasthan and Honorable Chief Minister of Rajasthan, they are on the way. So we expect them to be here any moment. Thank you very much.
हमारे विशिष्ट अतिथिगण हमारे बीच पधार चुके हैं। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप अपने स्थान पे खड़े हुए उनके सम्मान के लिए। I will request Mr. Justice Amanullah sir to please come on the dais. All please be seated. Thank you very much, sir. हम स्वागत करते हैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर जस्टिस सूर्यकांत, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री भजनलाल शर्मा सर, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह, जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वेलकम सर, राजस्थान के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश और रालसा के कार्यकारी अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा, ऑनरेबल डॉक्टर जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी, राजस्थान हाई कोर्ट एंड चेयरमैन राजस्थान हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी जोधपुर, आप सभी का आभार, आपने पधार करके हमें यहाँ कृतार्थ किया। एंड अलोंगसाइड साथ में उपस्थित ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड ऑनरेबल हाई कोर्ट जजेस ऑफ डायस, ऑनरेबल डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर श्रीमती दिया कुमारी एंड डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, डिग्निटरीज फ्रॉम एग्जीक्यूटिव्स, मीडिया पर्सनल एंड अबव ऑल हमारे प्यारे बच्चे जो रालसा के उड़ान 2.0 गेम्स के प्रतियोगिता जीतने वाले बच्चे हैं, एंड अदर डिस्टिंग्विश्ड किड्स। I believe that this is probably in Rajasthan one of the most powerful dices, and so is the audience that we have come across in the recent times. This emphasizes the importance of this landmark 3 days conference, cyber security, protection and inclusive access to justice. I welcome you all. Kamagani. This is a cliche, बार-बार कहते हैं, this is a cliche, but this is a fact that this time, the world is in a digital paradox. We live in an era where the world is at our fingertips, yet the technology that empowers us also exposes us for the vulnerabilities. We are currently navigating fascinating, albeit chaotic digital frontiers. Just as no mint can produce a single-sided coin, similarly, a no product, physical or digital, can exist without benefits and concerns. ये हमेशा होता है. This 3-day summit conference on cyber security perfectly coincides with another paradox that we are having one of the biggest AI summit in Delhi, which will expose the entire universe and entire globe about the benefits of AI. And here we are discussing over here the concerns that will arise out of it. It reminds me of a great couplet by Nida Fazli कि तवाजुल, that means balance, तवाजुल खौफ की बुनियाद पर कायम है दुनिया का. So this paradox always exists everywhere, and as nuclear physicist David Bohm said, everything is interconnected. So with benefits are always the concerns, and here are we to discuss those concerns and to overcome those concerns and safeties and to overcome those challenges. Today's seminar, Cyber Safety and Access to Justice, Challenges and Opportunities, addresses the two sides of the modern coin. On one hand, we face challenges, the rising tide of cybercrime, the anonymity of bad actors,
and the jurisdictional nightmares that make traditional policing difficult. On the other hand, we have the opportunities using technology to make legal systems more transparent, accessible, and efficient for the average citizen. The reality is that the access to justice should not depend on how tech-savvy we are or any person is. It should depend on the accessibility and fluidity as the person can have an access to it. Today we are joined by distinguished stakeholders of good governance that comprises law framers, judiciary, and executive, along with legal experts, cybersecurity professionals, policy advocates, and media personnel. They are here to help us bridge the gap between what the law says and how the digital world actually works. But before we start today's session, we'll have Vande Mataram, जो कि भारतीय जनमानस की जागृति का प्रतीक है. May I request to stand for Rashtriya Geet. बहुत धन्यवाद आपका. मैं मंचासीन गणमान्यों से दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की उद्घोषणा करने की अनुमति चाहता हूं.
शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपा ज्योति नमोस्तुते। मैं उस प्रकाश के सामने झुकता हूँ जो समृद्धि, शुभता, अच्छा स्वास्थ्य, धन की प्रचुरता और शत्रुतापूर्ण विचारों का विनाश लाता है। आप सभी का बहुत बहुत आभार मंच। With profound respect and a deep sense of privilege, we now commence the traditional ceremonial welcome of our esteemed dignitaries by presentation of a plant and felicitation by Safa. Unlike material mementos, a plant grows over time, symbolizing the enduring impact of the dignitaries' contribution to justice and society. The Safa is a mark of highest esteem and dignity in Rajasthani culture. It represents the valor, pride, and cultural heritage of Rajasthan. May I most respectfully invite Honorable Mr. Justice Sanjeev Prakash Sharma Sahab, the Acting Chief Justice, Rajasthan High Court and Executive Chairman RSLSA, to kindly felicitate with a traditional safa and ceremonial plant to Honorable Mr. Justice Suryakant Sahab, the Chief Justice of India, whose distinguished leadership of Indian judiciary stands as a guiding light for constitutional governance and the rule of law. We humbly request His Lordship to graciously accept this traditional welcome as a mark of our deepest regard. May I now invite Honorable Dr. Justice Pushpendra Singh Bhati, Judge Rajasthan High Court and Chairman RSLSA Jodhpur, to kindly extend the ceremonial welcome to Honorable Shri Bhajan Lal Sharma, Honorable Chief Minister of Rajasthan, whose visionary leadership and dedicated public service continue to guide the progress of the state. We most respectfully request him to graciously accept this traditional gesture of welcome. May I respectfully invite Honorable Mr. Justice Vineet Kumar Mathur, Judge Rajasthan High Court, to present the traditional safa and ceremonial plant to Honorable Mr. Justice Ehsanuddin Amanullah, Judge Supreme Court of India, whose judicial wisdom and invaluable contribution to constitutional jurisprudence are deeply admired. We humbly request His Lordship to kindly accept this ceremonial welcome. May I invite Shri Chanchal Mishra, Registrar General, Rajasthan High Court, to present the traditional welcome to Honorable Mr. Justice Sanjeev Prakash Sharma, the Acting Chief Justice, Rajasthan High Court and Executive Chairman RSLSA, whose stewardship and commitment to access to justice strengthen the judicial framework of the state. We respectfully request His Lordship to graciously accept this welcome. I now request Shri Hariom Atri, Member Secretary, Rajasthan State Legal Services Authority, to present the ceremonial welcome to Honorable Dr. Justice Pushpendra Singh Bhati Sahab, Judge, Rajasthan High Court and Chairman RSLSA Jodhpur, whose dedication to justice delivery and legal aid initiatives is highly valued. We humbly request His Lordship to kindly accept this traditional token of welcome. May I respectfully invite Honorable Mr. Justice Inderjeet Singh, Judge Rajasthan High Court and Chairman RSLSA Jaipur, to present a plant to Honorable Mr. Justice Rajesh Bindal, Judge Supreme Court of India, whose distinguished judicial service commands profound respect across the nation. We most respectfully request His Lordship to graciously accept this ceremonial welcome.
May I now invite Honorable Mr. Justice Mahendra Kumar Goyal, Judge Rajasthan High Court, to present a plan to Honorable Mr. Justice Prasanna Bhalachandra Varale, Judge, Supreme Court of India, whose contribution to the development of jurisprudence enriches the constitutional fabric of our country. We respectfully request His Lordship to kindly accept this welcome. I now invite Honorable Mr. Justice Farzand Ali Saab, Judge Rajasthan High Court, to present a plan to Honorable Mr. Justice N. Koteshwar Singh, Judge, Supreme Court of India, whose distinguished service upholds the majesty and integrity of law. We humbly request His Lordship to graciously accept this traditional gesture of respect. I now invite Shri Ajay Singh, Registrar cum Principal Secretary to Honorable Chief Justice, to present a plan to Ms. Diya Kumari, Honorable Deputy Chief Minister of Rajasthan, whose commitment to public service and governance reflects dedication to the welfare of people. We respectfully request her to graciously accept the ceremonial welcome. I now invite Shri Neeraj Kumar Bharadwaj, Director, Rajasthan State Legal Service Authority, to present a plan to Dr. Premchand Bairwa, Honorable Deputy Chief Minister of Rajasthan, whose service to the state is deeply appreciated. We humbly request him to kindly accept the token of welcome. Thank you. Thank you very much. Moving further, may I now request to play the Nalsa theme song. एहसास न्याय का सबके लिए, आकाश न्याय का सबके लिए, उल्लास न्याय का सबके लिए, विश्वास न्याय का सबके लिए। अपने इस हिंदुस्तान पर हक हमारा भी तो है, इंसाफ के इस आशिया पर हक हमारा भी तो है। एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है, एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है। ये ना सोचो दर्द हमारा कहीं सुना न जाएगा, अब न्यायालय खुद चलकर चौपालों तक आएगा। लाचारों को न्याय मिलेगा, दुखियारों को न्याय मिलेगा, कमजोरों को न्याय मिलेगा, मजलूमों को न्याय मिलेगा। अपने इस हिंदुस्तान पर हक हमारा भी तो है, उम्मीदों के इस गुलसितां पर हक हमारा भी तो है। एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है, एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है। गरीब और कमजोरों को मुफ्त एवं सक्षम कानूनी सहायता के लिए प्रतिबद्ध विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा, न्याय सबके लिए। यहाँ ऑडियंस में हमारे साथ विशेष योग्यजन बच्चे भी बैठे हैं, तो एक मुट्ठी आसमां पर हक उनका भी है। और ये पंक्तियां बच्चों मैं कहना चाहता हूँ, ये एक संवैधानिक वादा है आपके लिए कि इंसाफ की चौखट पे अब आप भी आएंगे और न्याय आप तक चल करके आएगा।
Every meaningful initiative begins with a vision, and a vision finds direction through dedicated leadership. In a remarkably short span of time, Honorable Mr. Justice Sanjeev Prakash Sharma, the Acting Chief Justice, Rajasthan High Court, and Executive Chairman RSLSA, conceptualized, planned, and meticulously executed this conference. Through continuous interaction with state legal services authorities and other stakeholders, His Lordship has sensitized all concerned to the pressing need of the hour, strengthening awareness, protection, and access to justice in this digital era. His Lordship's vision, however, is not confined merely to the subject of this conference. Under his leadership and stewardship, the Rajasthan State Legal Services Authority has been working with exceptional commitment, introducing new initiatives and structured plans aimed particularly at strengthening access to justice at grassroots level. As the program unfolds, we will also witness and appreciate that the vision of His Lordship is not confined merely to the theme of the conference, but the successive initiatives of RSLSA being launched today reflect a forward-looking approach, responding to contemporary societal needs with practical and people-centric solutions. It is my proud privilege to invite for the welcome address Honorable Mr. Justice Sanjeev Prakash Sharma, the Acting Chief Justice, Rajasthan High Court, and Executive Chairman, RSLSA. Sir. Honorable Mr. Justice Suryakant, Chief Justice of India, Honorable Shri Bhajan Lal Sharma ji, Chief Minister of Rajasthan, Honorable Mr. Justice Ehsanuddin Amanullah ji, Honorable Mr. Justice Rajesh Bindal ji, Honorable Mr. Justice P.B. Varela ji, Honorable Mr. Justice N. Kotishwar Singh ji, Honorable Srimati Diya Kumari ji, Deputy Chief Minister Rajasthan, Honorable Shri Premchand Bairwa ji, Deputy Chief Minister Rajasthan, my esteemed sisters and brother judges of Rajasthan High Court, Honorable Mr. Justice Anand Pathak, Judge High Court of Madhya Pradesh, Shri V. Srinivas, Chief Secretary Rajasthan, Shri Rajendra Prasad, Learned Advocate General Rajasthan, Shri Rajiv Sharma, Director General Police, Rajasthan, learned senior advocates, distinguished delegates and resource persons, learned members of the bar, judicial officers of the state and officers of the registry, Shri Chanchal Mishra, Registrar General, Rajasthan High Court, Shri Hariom Matri, Member Secretary, Rajasthan State Legal Services Authority, members of the print and electronic media, ladies and gentlemen, a very good evening to you all. It's a matter of great pride and privilege to welcome you all to the historic and culturally rich land of Rajasthan, which is known for its glorious history, magnificent forts, colorful traditions, and above all, its warm hospitality. In the historic city of Jaipur, where heritage blends seamlessly with modern progress, we gather to deliberate upon an issue that touches every citizen of the society in today's digital age: cyber safety, awareness, protection, and inclusive access to justice. At the outset, I express my profound gratitude to Honorable Mr. Justice Suryakant, the Chief Justice of India, who, despite his exceptionally demanding schedule, accepted our request to attend the inaugural session of this three-day national conference. His gracious presence today reflects his commitment to strengthen the institutional integrity, promoting digital transformation through e-courts project, and his concern for this important aspect of cyber safety awareness. While he has been reflecting on various aspects relating to accessibility to justice and delivering justice at the doorstep, today we would be able to have his guidance relating to the matter and method which His Lordship would suggest in tackling the big menace of cybercrime, to bring to book such criminals and provide protection and justice to the victims. His Lordship has been consistently reminding us that technology is not a luxury, but a tool to impart justice to all. I also take this opportunity to welcome Honorable Shri Bhajan Lal Sharma ji, the dynamic young Chief Minister of Rajasthan, under whose leadership the Rajasthan state is developing by leaps and bounds. I thank him for joining this conference, and his presence reflects the state government's commitment to a cyber-resilient state of Rajasthan and his faith in the rule of law
ensuring safety and welfare of citizens in increasingly digital world. I take this occasion to inform the Honorable Chief Justice of India that the state government has always shown its keenness in extending consistent support in improving the court infrastructure and facilitating technology integration. It has played a vital role in ensuring that the justice is not only delivered, but delivered efficiently and equitably. I also warmly welcome the Honorable Judges of the Supreme Court of India to this conference, which has elevated this gathering and brought great distinction and value to our proceedings. I also thank the Chief Secretary and the other officers of the state who have consented to participate in the conference. I am sure when the two minds, judicial and administrative, join together, problems arising on account of cyber frauds would be sorted out and we would be able to make headway to deal with it. In various sessions to be held in this conference, organized by the Rajasthan State Legal Services Authority, there shall be a brainstorming on various issues like crime investigation, victim protection, digital evidence handling, cyber fraud prevention, and coordinated institutional response. The awareness and protection must go hand in hand with access to justice. It is not enough to enact laws. It is also important that each and every citizen must be made aware of their rights and have the means to enforce them effectively. In this context, the role of the Rajasthan State Legal Services Authority has been extremely significant and proactive. Through legal and aid clinics, lok adalats, legal literacy campaigns, victim compensation schemes, and outreach programs in remote and rural areas, the authority is working tirelessly to bring justice closer to the people. Special initiatives have been undertaken to spread awareness about cyber safety and digital rights, particularly among students, women, and economically weaker sections. As the patron chief of the RSLSA, it gives me immense satisfaction to share that this conference will also mark the launch of a series of significant and forward-looking initiatives of RSLSA, reflecting our collective commitment to accessible, technological-driven, and inclusive justice. Today, we shall be launching comprehensive mediation initiatives, including the online mediation and Lok Adalat platform, unveiling a handbook on mediation to strengthen alternative dispute resolution mechanisms across the state. A landmark step is the launch of Mahila Panchayat, Pan-Rajasthan, aiming at promoting community-based mediation, awareness and empowerment of women. We will also launch awareness and educational initiatives and a booklet and statewide awareness campaign for schools in Rajasthan to sensitize young minds. So also unveil Legal Services Ready Reckoner 2026. In response to the growing challenges of the digital age, we are introducing dedicated cyber crime redressal initiatives, unveiling a handbook on cyber awareness, and launching a cyber protection scheme and action plan 26-27, along with establishment of special cyber crime redressal units at RSLSA and at RSLSA across the Rajasthan. Further, as part of our commitment to inclusivity, we shall hold a prize distribution ceremony for games and activities organized for specially abled children across Pan-Rajasthan and the banner of RSLSA Sports for Awareness Udan 2.0, celebrating their talent and resilience. The presence of esteemed members from various stakeholders, judiciary, executive and police administration, academia, and civil society in this conference would collaboratively address the cyber challenges effectively. In my view, no single institution can combat cybercrime in isolation. A coordinated and informed response is the need of the hour. The deliberations in this 3-day national conference would bring out the practical strategies required to be adopted to combat and enhance cyber resilience. Practical solutions would be generated and institutional cooperation would be strengthened, which would contribute to build a secure digital ecosystem rooted in the rule of law. With these words, I once again express my deepest gratitude to the Honorable Chief Justice of India, Honorable Chief Minister of Rajasthan, Deputy Chief Ministers of Rajasthan, and all the distinguished luminaries, and wish this conference resounding success in achieving its noble objective.
Thank you. Jai Hind. थैंक यू वेरी मच सर. अब मैं जिनको बुलाने जा रहा हूँ उसके पहले आई मस्ट टेल यू वन थिंग दैट देयर इज अ वेरी फेमस राइटर कॉल्ड स्टीवन पिंकर. ही इज़ अ वेरी बिग थॉट लीडर. उन्होंने किताब लिखी है द लैंग्वेज इंस्टिंक्ट. उसमें वो कहते हैं दैट फ्यू पीपल आर ब्लेस्ड विद ग्रामर जीन. उनके पास एक ग्रामर जीन होता है. सो माई नेक्स्ट गेस्ट ऑनरेबल डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी, he is celebrated not for the depth of his judgments but for the sheer brilliance of his oratory skills. आप शब्दों का जादू जो आप देखेंगे, आपके बारे में विख्यात है कि जब आप बोलते हैं तो कानून की जटिल से जटिल धाराएं भी एक सरल और स्पष्ट कहानी की तरह समझ में आने लगती हैं. नाउ मे आई इनवाइट डॉक्टर ऑनरेबल जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी, जज राजस्थान हाई कोर्ट एंड चेयरमैन राजस्थान हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी, फॉर हिज इंट्रोडक्टरी एड्रेस. आदरणीय भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति, हमारे इस विधि न्यायिक परिवार के मुखिया ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत साहब, भारत के प्रजातंत्र के गौरवमय प्रतीक हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी साहब, ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट से न केवल वरिष्ठ न्यायाधिपति बल्कि लीगल सर्विस अथॉरिटी के राजस्थान चैप्टर के मेंटोर अमानुल्लाह साहब, बड़े भ्राता माननीय मुख्य न्यायाधिपति राजस्थान हाई कोर्ट संजीव प्रकाश शर्मा साहब, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से सीनियर जजेस ऑनरेबल बिंदल साहब, ऑनरेबल वराले साहब, ऑनरेबल कोटेश्वर साहब, दोनों रेस्पेक्टेड डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स, चीफ सेक्रेटरीज, ब्रदर्स, सिस्टर्स, जजेस, प्यारे बच्चे, राजस्थान जुडिशियल एकेडमी के ट्रेनीज़ और जो भी इस सभागार में और आप सब मौजूद हैं. आज एक अत्यंत हर्ष का विषय है कि राजस्थान के कोने कोने से, जैसलमेर से लगा करके बांसवाड़ा से और डूंगरपुर से लगा करके प्रतापगढ़ और गंगानगर तक, सब तरफ से जजेस आज हमारे यहाँ आए हुए हैं और हमारी इस 3 दिन की कॉन्फ्रेंस को मजबूत बनाने के लिए आप सब जो हज़ार किलोमीटर तक चल के आए हैं, आप सबको भी मैं आज विशेष रूप से ये एश्योर करना चाहता हूँ कि हम जब हमारी परिवार के कैप्टन्स के साथ मिलके इन पे विचार करेंगे तो हमारे दिमाग के कई ऐसे नए पहलू हमें जानने को मिलेंगे जो अच्छे होंगे. ठीक आज से एक वीक पहले, पिछले शुक्रवार को, जब माननीय मुख्य न्यायाधिपति अंतर्राष्ट्रीय न्यायपालिका कॉमनवेल्थ गेम्स प्लेटफॉर्म के कॉमनवेल्थ जुडिशियल एजुकेटर्स के प्लेटफॉर्म पे मुझे राजस्थान हाई कोर्ट से जाने का मौका हमारे चीफ जस्टिस ने दिया. जब मैं पहुंचा तो मुझे लगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जजेस का क्या कॉमन होगा. तब मैंने जब वहाँ मेरे मन में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह था इस बात को, लेकिन मुझे देख करके बहुत खुशी हुई कि आज इतने लंबे समय तक इस विधि जगत से जुड़े होने के बावजूद वहाँ मुझे ये जान के खुशी हुई कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्लेटफॉर्म की स्थापना हमारे माननीय मुख्य न्यायाधिपति आदरणीय सूर्यकांत साहब ने जो करी, वह एक अद्भुत स्थापना थी. क्योंकि हर बड़े देशों से आए हुए कई जजेस जो चीफ जस्टिस थे, उनकी जो कॉमन इश्यूज़ थे टेक्नोलॉजी को लेकर के, साइबर क्राइम को लेकर के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के, वो अपने आप में एक इस बात को इंगित कर रहे थे कि यह दृष्टिकोण केवल एक देश या एक न्यायपालिका से संबंधित नहीं है. यह दृष्टिकोण उस आम आदमी से संबंधित है जिससे हम सब जुड़े हुए हैं और जिसके लिए हमें सबको मिल करके काम करना है. माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय ने उस दिन अपनी स्पीच बड़ी दी थी, लेकिन उसकी एक 3 लाइन जो मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करी, जिसको मैं आपके सामने कोट करना चाहूँगा, और वो ये है: टेक्नोलॉजी एनहेंसेस विद इन कोर्ट, टेक्नोलॉजी एनहेंसेस एक्सेस, एक्सेस रिक्वायर्स इंस्टीट्यूशनल इनोवेशन, innovation must remain anchored in constitutional values, and constitutionalism itself is strengthened through global dialogue. And the amazing part that कि ये जो एनर्जी जनरेट हुई, उससे जितने भी मुख्य न्यायाधिपति ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नाइजीरिया, केनिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, तमाम सब ने खुल के इस एनर्जी का इस्तेमाल किया और
मैंने ये देखा एक पार्टिसिपेंट के रूप में कि किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं तोड़ करके, क्योंकि आज हम सब जानते हैं कि डेटा की कोई बाउंड्री नहीं है हमारे पास। ऐसा नहीं है कि हमारे देश के अंदर ही सारा डेटा अवेलेबल है जिसके लिए सारे युद्ध लड़े जा रहे हैं, जिसके लिए सारा कंट्रोल करने के लिए सारी ना इकोनॉमी हमारी लोकल है। आज क्रिप्टो करेंसी सभी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करके अपना काम कर रही है, ना वो किसी बैंक से कंसर्न्ड है, ना किसी करेंसी से कंसर्न्ड है, ना किसी देश से कंसर्न्ड है। तो जो जागृत आज जो आम नागरिक है उसको जागृत करने की अत्यंत आवश्यकता शायद आज से पहले कभी नहीं थी। आप सब इस बात को जरा एक मिनट अपनी आंख बंद करें और ऐसा सोचें कि एक मनुष्य जाति के रूप में हम सब की जिम्मेदारी क्यों इंपॉर्टेंट है। आज हम रात को सोएं और सब सुबह उठें तो आसमान का रंग अलग हो, हवा की बयां अलग हो, हम सबके आसपास जो एक दूसरे के चेहरे अलग हों, हमारे घर अलग तरीके से हों, हमारी नदियाँ पहाड़ और सब अपना स्वरूप बदल लें, तो हमें कैसा लगेगा। कुछ ऐसा ही आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारी धरती के साथ, हमारी मानव जाति के साथ हो रहा है, क्योंकि तकनीक इतनी जल्दी बदल रही है कि तकनीक से उत्पन्न होने वाले खतरे और तकनीक से उत्पन्न होने वाले भय को रोकना एक आदर्श प्रजातांत्रिक समाज की जिम्मेवारी है, जिसके लिए आज हम सब हमारे वरिष्ठ जनों के साथ यहाँ इकट्ठे होकर के और इस बात का प्रयास करेंगे इन 3 दिनों के अंदर कि हम इस बात को समझें कि आज इस बात की क्या वैल्यू है, क्या वैलिडिटी है, क्या ज़रूरत है आज कि इस बात को हमें इतना। एक आम दुकानदार के पास एक मैसेज आता है कि कृपया ये तुम्हारे को बाय पोस्ट ये मैं भेज रहा हूँ, 2 रुपये देना इसके ताकि तुम्हारे डिलीवर हो जाए। बेचारा दुकानदार अपनी साधारण बुद्धि से वो 2 रुपये देता है और उसके पूरी बैंक अकाउंट साफ हो जाता है। ये ऐसे एक्चुअल किस्सों से हमारा पूरा अखबार सुबह भरा हुआ होता है। जब हम देखते हैं कि एक प्रोफेसर लेवल की अधिकारी जो हैं वो किस प्रकार से डिजिटल अरेस्ट में चली जाती हैं, किस प्रकार से घंटों दिनों तक उनको डिजिटल इतनी जानकार ज्ञानवर्धक होने के बावजूद भी उनको इतना डिजिटल अरेस्ट में रख करके उनको इतना जो है वो प्रताड़ित किया जाता है कि उनको ये समझ में नहीं आता कि इसका क्या सॉल्यूशन है, जबकि उनसे न तो साइबर क्राइम्स दूर थे, न साइबर इंफॉर्मेशन दूर थी। ये सब चीज़ें इस और इंगित करती हैं कि आज हमें कहाँ जाना है। एक बात और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि आज जो है वर्ल्ड साइबर क्राइम की रेलेवेंस, एक एग्जाम्पल से मैं आपको और समझाना चाहूँगा कि अभी पिछले कुछ सालों के अंदर जो साइबर क्राइम हुआ उसकी वैल्यू जो आंकी गई है वो 10 ट्रिलियन है डॉलर्स। केवल दुनिया में 2 अर्थव्यवस्थाएं हैं, एक यूएस और एक चीन, जो 10 ट्रिलियन से ऊपर हैं, बाकी सब 10 ट्रिलियन से नीचे हैं। यानी कि तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था अगर दुनिया की है तो फ्रॉड की है, साइबर क्राइम की है, साइबर डिफॉल्ट्स की है और साइबर लूट की है। आप समझिए इस मैग्नीट्यूड को कि किस मैग्नीट्यूड पे इवन हिंदुस्तान के अंदर जो है वो करीब 65 लाख मुकदमे पिछले 5 सालों के अंदर दर्ज हुए हैं और करीब 55,000 करोड़ रुपया हमारे आम आदमी का लूटा गया है या ले लिया गया है। मैंने जब आपको कहा कि दुनिया परिवर्तित हो जाए तो आपको कैसा लगे, तो आपने सोचा होगा कि इस एग्जाम्पल का यहाँ से क्या लेना देना। इस एग्जाम्पल का यहाँ से पूर्णतः लेना देना यह है कि आज पहले एक आदमी जब कानून को चुनौती देता था तो उसके हाथ में या तो एक हथियार होता था या उसके पास एक सोच होती थी, या वो आपके घर के अंदर घुस करके एक आम आदमी को चोरी कर लेता था या उसकी चीज़ उठा लेता था या उसके ऊपर क्राइम करता था। तो उसका एक व्यवहार था, उसका एक स्वरूप था, एक उसके पास एक चाकू हो सकता था, उसकी एक दिशा थी। आज वो कोई दिशा नहीं है, बिना दिशा के वह क्राइम आगे बढ़ रहा है और उस दिशा नहीं होने की वजह से इस बात का संकेत है कि क्यों आज विधि जगत को और सरकार को और क्यों हम सब लोगों को आज अत्यंत जागरूक होने का विषय है कि हम सब खुद इस बात को समझें कि किस प्रकार से हम इसका समाधान ढूंढ सकें और किस प्रकार से हम केवल यह ना सोचें कि तकनीक तो दूर बैठी है। तकनीक वह तूफान है जो हमारे पास है, जो हमारे को लगातार हिट कर रहा है, और अगर हम तकनीक के साथ नहीं चले तो तकनीक हमें बहा के ले जाएगी और शायद इससे हमारे देश को, हमारी अर्थव्यवस्था को, हमारे आम नागरिक को, जिसके लिए हम सब कटिबद्ध हैं, जिसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं, जिसके लिए हमारा प्रॉमिस है 39A में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी हमारा प्रॉमिस है और उसके अलावा भी हमारा प्रॉमिस है जिसके लिए मजबूत बनाने का, वो मजबूती हम उसको शायद प्रदान नहीं कर पाएंगे। मैं आपको एक और छोटी सी बात इस बात से जोड़ के बताना चाहूँगा कि आप सब ने राम और रावण की कहानी सुनी है। शायद रावण से बड़ा दुनिया में कोई और नेगेटिव वो नहीं था और शायद राम से ज़्यादा हम मानते हैं जब ऐसा हम सुनते हैं इतिहास के बारे में। तो आप सब ने कभी सोचा कि रावण की ताकत क्या थी? रावण की ताकत न उसकी भुजाओं में थी, न उसके पाँव में थी, न उसके हथियारों में थी। उसकी ताकत थी मायावी उसके 10 सिर में, जो एक मायावी शक्ति थी जिससे एक काटो तो दूसरा उगे और दूसरा काटो तो तीसरा उगे। तो आज वो मायावी शक्ति जो हमारे सामने है उसका कोई सिर पाँव नहीं है और हमारे को पता नहीं है कि वो कहाँ केंद्रित है, हमारे को ये पता नहीं है। आज
चीफ साहब, हम जो है वो हम राजस्थान उच्च न्यायालय में आजकल कोई कई दिनों से जैसे स्कूल में घंटी बजती है वैसे घंटी बजती है कि बॉम्ब थ्रेट आ गई, और करीब हम घंटों घंटों जो हैं हम कोर्टों के बाहर जाकर के और बैठे रहते हैं, और ये एक दिन नहीं होता, 2 दिन नहीं होता, ये 20-25 दिन हो चुका, और अधिवक्तागण और सारे न्यायाधिपति जो हैं वो बिल्डिंग्स खाली कर देते हैं, क्योंकि सुरक्षा प्रोटोकॉल है जिसको हम किसी भी तरह से ब्रीच करना नहीं चाहते, क्योंकि वो आम जनता भी वहाँ पे होती है, लेकिन हम जाते हैं। लेकिन ये हम जब उनसे पूछते हैं कि सुरक्षा प्रोटोकॉल तो है, हम आपको पूरा रेस्पेक्ट भी दे रहे हैं और करते भी रहेंगे, लेकिन हम आज भी उनके पास या हमारे पास इस चीज़ का कोई समाधान नहीं, क्योंकि उनकी बात भी जेन्युइन है कि डमी सर्वर से जो भी थ्रेट आ रही है वो डमी सर्वर से आ रही है। और नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि हम, अगर वो पिछली बार जब जोधपुर में आई थी तो वो उन्होंने बताया कि स्विट्जरलैंड से इसकी पहली मेल आई है, और वो पीछे डमी सर्वर था, और उसके पीछे और आउटलुक है, और आउटलुक के पीछे और डमी सर्वर है। तो कुल मिलाकर के ये पता लगाना ही मुश्किल है कि वे लोग कहाँ से आ रहे हैं। और शायद ये चीज़ खाली न्यायपालिका के साथ नहीं हो रही है। हमने देखा कि एक दिन पूरे हिंदुस्तान के वायुयान, जो सिविल वायुयान है, वो सब उनके सारे शेड्यूल्स बिगड़ते जा रहे थे, क्योंकि हमारा सारा प्रोग्राम आज की कंप्यूटराइज्ड है। आज की तारीख में टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज की तारीख में पूरे देश को गवर्न कर रही है। और अगर हम इस बुद्धिमत्ता का विश्वसनीयता पे नहीं जाएंगे तो ये आवश्यक नहीं है कि हम इसको फेस कर पाएँ, आवश्यक नहीं है कि हम उसको उस प्रकार से, आज कांचीबौली केस के अंदर जब ये फेक वीडियोस आए तो कई बार उसके आम अधिवक्ता जो हमारा था उस वीडियो से इतना व्यथित हुआ, और आम समाज इतना व्यथित हुआ कि इससे पर्यावरण प्रेमी बहुत व्यथित हुए, लेकिन बाद में पता चला कि वो डीप फेक था। और कई तरह की ऐसी चीज़ें और भी आज हमारे साथ होती जा रही है, जिसमें वॉइस क्लोनिंग से लगा करके और अनेक प्रकार की टेक्निक्स जो है काम में ली जाती है। आपने सबने ग्रोक के बारे में सुना होगा, कई देशों में उसका जो है वो कई देशों में उसका इस्तेमाल रुक गया, और कई देशों में उस पर प्रतिबंधित कर दिया गया। जब अभी हम हमारे माननीय अतिथियों का इंतजार कर रहे थे, तो ग्रोक में पहली बार मेरे को ऑनरेबल जस्टिस अशोक जैन साहब ने अपने मोबाइल पे बताया कि किस प्रकार से उनके और उनकी पत्नी का एक साधारण सा चित्र, उन्होंने कैसे समुद्र में नहाते हुए और समुद्र में उनको मतलब अच्छी तरह से दोनों ने साथ समय बिताया, ऐसा एक बड़ा सारा वीडियो उन्होंने उस ग्रोक से बना लिया। खैर, बात ऑनरेबल जस्टिस अशोक जैन साहब ने तो उसको करके देखा, मैंने उसको कई बार अखबार में पढ़ा, पर पूर्ण बात यह है कि डीप फेक हो या टेक्नोलॉजी बेस्ड चीज़ें हो, ये आज की तारीख में हो रही हैं, और हमारे न्यायालय इससे अछूते नहीं है, हमारा विधि जगत इससे अछूता नहीं है। और मैं ये चाहता हूँ कि ये जो 3 दिन की कॉन्फ्रेंस है, इसको आप सब इस चीज़ के लिए इस्तेमाल करें कि हम सब जब यहाँ से निकलें तो हम मजबूत होकर निकलें। हम सब इस बात को, चाहे हम इस बात को समझें कि कैसे हमारा आम नागरिक जो है उसको हमें मजबूत बनाने के लिए इस तकनीक को समझना जरूरी है, किस प्रकार से हमें इस मायावी जाल जिसका हम पूरी तरह से अभी हमारे पकड़ में नहीं है, किस प्रकार से हम उसको किस प्रकार से हम हमारे सुरक्षा कवच जो हमें आम नागरिक को सबको मिलके देना है, तीनों ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट को मिलके देना है, किस प्रकार से उस सुरक्षा कवच को हम और मजबूत बना सकते हैं। मैं ऐसी अपेक्षा रखता हूं कि आप सब जो सैकड़ों किलोमीटर चल करके आए हैं, और आप सब अपने अपने जगह बड़ा एक्सपीरियंस रखने वाले जजेस हैं और विधि के जानकार हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि जब आप सब एक पूर्ण जानकारी इसकी अपने मस्तिष्क में लेके जाएंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि उस आम नागरिक जिसके लिए आज राजसा के अंडर में हम यहाँ बैठे हैं, जो हम लीगल सर्विस अथॉरिटी उस ब्रिज की तरह एक्ट कर रहा है, जो उस आम नागरिक को मजबूत बनाने के लिए, उससे मिलाने के लिए, उसकी परेशानियों को मिटाने के लिए, उसकी भय को मिटाने के लिए, उसकी एंग्जाइटी को मिटाने के लिए आज हम सबको इस हॉल में उन्होंने एकत्रित किया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माननीय न्यायमूर्ति श्री संजीव प्रकाश शर्मा के विलक्षण नेतृत्व में राजस्थान लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने विगत 1 माह में 8 इनिशिएटिव्स के विजन और इम्प्लीमेंटेशन डॉक्यूमेंट्स तैयार किए हैं, जिसमें से सबसे मुख्य साइबर सेफ्टी और मीडिएशन है। E-Samadhan, the online mediation and Lok Adalat platform. In every era, justice has evolved with society, from the wisdom of village elders to courtrooms of law, and now digital world. The fundamental aim has remained constant, accessible, timely, and humane justice. Today, we stand at a defining moment in that journey. By the inspiration of Honorable Justice Suryakant, Honorable the Chief Justice of India, and Patron-in-Chief Nalsa, with the guidance of Justice Vikramnath, Honorable Judge, Supreme Court of India, and Executive Chairman Nalsa, and under the leadership of Justice Sanjeev Prakash Sharma, Honorable the Acting Chief Justice and Executive Chairman Nalsa, this digital initiative is being launched to strengthen accessible, efficient, and citizen-centric justice.
RSLSA is grateful to Honorable Chief Minister Shri Bhajan Lal Sharma Sahab for generously providing the budget for the development of this unique e-platform. This shall be maintained with the technical support from the developer Jupiter's Justice Technologies Private Limited. We express our gratitude to Mr. Raman Agarwal and his team for their commitments. With this objective, introduces an integrated digital justice ecosystem, a platform that enables citizens to resolve disputes through mediation and Lok Adalat proceedings without the burden of travel, delay, or procedural complexity. May I now request Honorable Mr. Justice Surikant, the Chief Justice of India, to kindly launch the online mediation and Lok Adalat platform, e-Samadhan. Rajasthan State Legal Services Authority's unique initiative, e-Samadhan, a digital Lok Adalat and digital mediation platform. Under the visionary and sagacious leadership of Justice Surikant, Honorable Chief Justice of India and Patron-in-Chief of the National Legal Services Authority, NALSA, with the enlightened guidance and progressive judicial foresight of Justice Vikram Nath, Honorable Judge of the Supreme Court of India and Executive Chairman, NALSA, and under the dynamic and reform-oriented leadership of Justice Sanjeev Prakash Sharma, Honorable Acting Chief Justice and Executive Chairman, Rajasthan State Legal Services Authority, under the august aegis of the Rajasthan High Court, this landmark digital initiative in dispute resolution is being launched to strengthen accessible, efficient, and citizen-centric justice across the state. The present initiative is guided by rising demand for dispute resolution, addressing for broader accessibility, strengthening procedural efficiency. It's time to match with digital era to deliver justice at doorstep. Introducing India's first end-to-end digital mediation platform developed by Rajasthan State Legal Service Authority. Users can sign up and file cases from anywhere. Click on Initiate Mediation. Fill up applicant details like name, contact information, address, and then click Submit. Now fill identical credentials for respondent, and then click Submit followed by Save and Next. Select the dispute type, then Save and Next. Fill in the mediation referral order details. Attach the supporting documents, then click Save and Next. Now, upload the mediation referral order document and click Save and Next. Now finally, preview all the details and the attachments followed by Submit. Customize dashboard for various stakeholders such as NBFC, banks, insurance companies, etc. Send automated notifications to disputing parties via email and SMS. Conduct secure online mediation sessions directly on the platform. During the sessions, you can access case records and make submissions in multiple languages with the AI-enabled Smart Document feature. Get instant summaries and conduct Q&A anytime, making every case easier to navigate. Draft settlement agreements by dictating in any vernacular language. And whenever you need guidance, the Help Center offers clear, step-by-step video guides for every feature. Today, we take the next leap forward with the digital mediation platform. Rajasthan State Legal Service Authority has also adopted the digital Lok Adalat platform. This next generation end-to-end system is transforming the traditional judicial ecosystem in Rajasthan. Designed for massive scale, bulk case imports, notice generation, award generation, bench roster, pre-litigation, data analytics. Accessible to everyone, everywhere. A digital justice ecosystem designed for early access, trust, and justice. From mediation to digital Lok Adalats, connecting people to accessible justice. The Rajasthan State Legal Services Authority invites all stakeholders, members of the bar, litigants, institutions, and citizens to actively promote and adopt this platform for the expeditious resolution of long-pending disputes. By embracing this initiative and moving in stride with the advancing pace of information technology, we can collectively build a more responsive, accessible, and future-ready justice delivery system.
Thank you very much. Mediation, yani madhyasthata, is simple and effective way to resolve disputes. Also called as alternative dispute resolution, refers to various methods used to resolve disputes outside the court. इसमें मुख्य है मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलिएशन, निगोसिएशन. इन सब बातों को समझाने के लिए रालसा ने एक बहुत सरल भाषा में एक पुस्तक को बनाया है. मैं सुशोभित मन से निवेदन करूंगा कि वो इस पुस्तक का विमोचन करें. Next is Nari Samvad, Samudayik Samadhan Manch. It has been designed as a structured community mediation mechanism at the grassroots level across Rajasthan. May I now request the dignitaries on the dais to kindly grace us by unveiling the program of Nari Samvad, Samudayik Samadhan Manch. इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण 5 ग्राम पंचायतों का चयन करेगा तथा 15 प्रशिक्षित संवाद सदस्यों का एक पैनल गठित किया जाएगा जिसमें सभी सदस्य महिलाएं होंगी. इसी पैनल में से 3 महिला मध्यस्थों का एक पैनल सामुदायिक मध्यस्थता की कार्रवाई संचालित करेगा. The next initiative is Empowering Rajasthan's Youth, a legal literacy initiative 2026, legal literacy and sensitization program in schools pan Rajasthan, named as Transformative Tuesdays, Navigating Life Legally. May I now respectfully request Honorable Dias to unveil Empowering Rajasthan's Youth, a legal literacy initiative 2026. As it is going to be organized as on first and third Tuesdays of every month. All the judicial officers on every first and third Tuesday of every month are going to cover almost 55,000 schools span Rajasthan for this legal literacy initiative. In furtherance of this initiative, I request Honorable Dias to kindly grace us by unveiling 9 booklets. They are basically the 9 chapters that is a compilation of all the topics relevant to sensitize our adolescents. देखिए तालियों का थोड़ा सा आवाज़ ज़ोर से रहे तो अच्छा लगेगा. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. Now, Legal Services Ready Reckoner 2026 is often called as Encyclopedia of Rajasthan State Legal Services Authority, and as it has everything from pin to plain about RSLSA. It contains various enactments, rules, regulations, circulars, etc. relating to legal fraternities. This reckoner is of immense help and use for all, especially the legal fraternity. May I request the dais to launch the Ready Reckoner Legal Services 2026. An institution progresses with vision, but it advances with planning.
May I now most respectfully request the honorable dignitaries on the dais to kindly launch the RSLSA Action Plan 2026-2027 to strengthen the outreach and coordinated functioning across the state of Rajasthan. Rajasthan State Legal Services Authority has prepared a comprehensive action plan for the year 2026-2027 for all the DLSAs. We are confident that this structured calendar of activities will further strengthen access to justice and deepen legal awareness across Rajasthan. डायस माफ़ी चाहूँगा, हम आपको बैठने का मौका नहीं दे रहे हैं. Now I'll request the distinguished डायस to unveil the handbook on cyber awareness. It is with great pleasure that I wish to inform that one of our Secretary of District, Pawan Jinwal, has written extensively an article in it. Thank you very much, Dias. Thank you very much. Cyber Protection Scheme 2026 and Cyber Redressal Unit. The Cyber Redressal Unit is a bridge between the victim and the justice delivery system, ensuring that cybercrime victims are not left helpless, but are supported, guided, and protected. आदरणीय मंच आखिरी है बस अनवीलिंग ऑफ मंथली न्यूज लेटर ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट. हम माफी चाहेंगे, आप बहुत देर से खड़े हैं. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू वेरी मच. आज हमारे बीच एक ऐसे जनप्रिय नेता उपस्थित हैं जिनका जीवन सादगी और सेवा का प्रतीक रहा है. एक सामान्य परिवार, ग्राम पंचायत की राजनीति से अपनी यात्रा शुरू करके आज वे राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं. चाहे युवाओं को पारदर्शी रोजगार देना हो, निवेशकों के लिए प्रवेश के द्वार खोलना हो या वर्षों से लंबित जल संकट का समाधान करना हो, उनके निर्णयों में हमेशा लोक कल्याण की भावना झलकती है. मैं बहुत ही सम्मान के साथ राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं कि वे मंच पर पधारें और अपने विचारों से हमारा मार्गदर्शन करें. श्री भजनलाल शर्मा सर. सभी को नमस्कार. आज के इस साइबर सुरक्षा, जागरूकता, संरक्षण और न्याय तक समावेशी पहुंच के इस 3 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में माननीय मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय जस्टिस सूर्यकांत जी, जिनका कि मैं, क्योंकि आज आगमन हुआ है, उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं. माननीय न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह खान जी, माननीय कार्यवाहक न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय जस्टिस संजीव प्रकाश जी शर्मा साहब, माननीय न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह जी भाटी जी,
माननीय न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय राजेश बिंदल जी, माननीय न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय पीबी बराले जी, माननीय न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय श्री एन कोटेश्वर सिंह जी, माननीय हमारी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, दूसरे हमारे उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी, इस समारोह में विराजमान माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशगण, समारोह में विराजमान सभी अधिकारीगण, सभी जिला न्यायाधीश, हमारे एजी डबल एजी, सभी अधिवक्ता और प्यारे छात्र और छात्राओं, सबसे पहले तो मैं इस कार्यक्रम में आने का आपको सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये हमारा सौभाग्य है, देश के हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री सूर्यकांत जी हमारी इस राजस्थान की शक्ति और भक्ति की इस वीर भूमि पर पधारे हैं। मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये राजस्थान के लिए गर्व और सौभाग्य का क्षण है। आज हम सब यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आयोजित कार्यक्रम में एकत्रित हुए हैं, क्योंकि ये आज के समय में हम इसको बहुत बड़ी चुनौती भी कह सकते हैं और उसे दुधारी तलवार भी कह सकते हैं। इसका फायदा है तो हमें उससे साफ सचेत भी रहना है। आज हम सब यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो हमारा है, साइबर सुरक्षा के समय में एक महत्वपूर्ण, जैसा मैंने कहा, चुनौती भी है। ऐसे समय में साइबर सुरक्षा पर यह सम्मेलन एक बहुत ही प्रशंसनीय पहल है और मैं देख रहा हूं कि जिस तैयारी के साथ आपने जो ये सम्मेलन रखा है उसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि लगातार आपने जिस तरह का विजन इसका लिया है और लगातार आपने जिस तरह से आपने जो साहित्य संग्रहण किया है और हर विषय को छुआ है, क्योंकि इसकी तैयारी, इसकी पहल हम कैसे जन में जागरूकता के माध्यम से उन सभी को जिनके इरादे गलत होते हैं उनको किसी भी तरह का मौका नहीं मिले, हम पहले से ही जन में ये सावचेत करने के लिए पूरी तैयारी के साथ इस सम्मेलन को कर रहे हैं। इस सम्मेलन की थीम साइबर सुरक्षा, जागरूकता, संरक्षण और न्याय तक समावेशी पहुंच आज के समय में सबसे जरूरी और प्रासंगिक मांग है। इस थीम का सार यही है कि डिजिटल की दुनिया में न्याय भी सुलभ हो और सुरक्षा भी सुनिश्चित हो, और सुरक्षा सुनिश्चित होगी तो निश्चित रूप से हम डिजिटल के क्षेत्र में और गति से काम कर सकते हैं। डिजिटल युग में जहां एक और न्याय तक पहुंच आसान हुई है, वहीं दूसरी ओर नए प्रकार के खतरे भी सामने आए हैं। साथियों, आज से करीब एक दशक पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल इंडिया का सपना देखा था, तो लोगों के मन में कई तरह की बातें आती थी। तब शायद बहुत से लोगों को यह असंभव लगा था, लेकिन आज वह सपना पूरी तरह हकीकत बन चुका है। आज एक सामान्य सब्जी वाला भी डिजिटल माध्यम से सीधा अपने खाते में पैसा प्राप्त करता है और उसको इस बात का डर भी नहीं रहता है कि कहीं मेरे साथ कोई इस तरह की घटना हो जाएगी। यह सुविधा भी उसको मिली है। आज गांव का किसान अपने खेत में बैठकर फसल बीमा का लाभ भी लेता है।
हमें पहले जब चलते थे तो गांव से जब व्यक्ति निकलता था तो पैसे भले ही कम होते थे, लेकिन उसके लिए घर वाले 4 बार पूछते थे। पैसों को ठीक प्रकार से रख लिया, कहां रखा है बताइए, किस तरह से आप ले जा रहे हो, कोई बड़ा सामान लेने जा रहे हो, तो बड़ी चिंता रहती थी। आज उस चिंता से मुक्त हैं, क्योंकि चिंता है ही नहीं। जाएंगे मोबाइल से तुरंत उसका पेमेंट कर देंगे। लेकिन इस स्थिति में हमको उतना ही सावचेत भी रहना है। गरीब की पेंशन बिना किसी बिचौलिए के सीधी उसके खाते में पहुंचती है। पहले आप देखते थे, लोग कहते थे कि उसका जो अंतिम पायदान पर व्यक्ति बैठा है उसको पूरी सुविधा नहीं मिल रही है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने पूरा पैसा जो उस व्यक्ति के पास पहुंचना चाहिए वो डिजिटल माध्यम से पूरा का पूरा पैसा पहुंच रहा है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि आज जो भी योजनाएं होती हैं, लाभकारी योजनाएं होती हैं, वो किसी ना किसी को कुछ देते हैं तो सामान पहले खरीदते हैं। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि ऐसा काम करिए जो सीधे उसके खाते में जाए। तो डिजिटल माध्यम से वो उनके खाते में जाते हैं, उनको पूरा का पूरा लाभ मिलता है। ये हमारी डिजिटल की जो क्रांति है उसके कारण ये हुआ है। एक साधारण नागरिक घर बैठे अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। ई कोर्ट पोर्टल के माध्यम से एक आम नागरिक अपने मुकदमे की स्थिति घर बैठे जान सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई होती है, जिससे दूर दराज के गांव का व्यक्ति भी बार बार अदालत के चक्कर काटने से बच जाता है। ऑनलाइन मध्यस्थता और लोक अदालत प्लेटफॉर्म ने विवादों को सुलझाने का एक सरल और तेज रास्ता खोला है। इससे न केवल न्याय त्वरित और सुलभ हुआ है, आज डिजिटल न्याय प्रणाली का एक ऐसा माध्यम बन चुकी है जो समाज के अंतिम छोर पर खड़े इंसान को भी राहत देने का काम कर रही है। साथियों, हर प्रगति के साथ एक चुनौती भी आती है और यह स्वाभाविक है। आप कोई भी देख लीजिए, जब गांव में बिजली आई थी तो कहते थे बिजली आ गई, फायदा तो बहुत है, लेकिन उनसे सावचेत भी रहना है, उसको किस तरह से यूज करना है, यह भी था। गांव में उस समय यह कहते थे कि बिजली तो आई है लेकिन परेशानी है, लेकिन लाभ भी है। इस तरह के कई बातें होती हैं जो एक कोई ना कोई चुनौती तो वो लेकर के आती हैं, उनके साथ चेतना से काम करना होता है। जैसे डिजिटल दुनिया का विस्तार हुआ है, वैसे वैसे साइबर अपराध के नए नए रूप भी सामने आने लगे हैं। अभी हमारे माननीय न्यायाधीश पुष्पेंद्र जी बता रहे थे, उन्होंने कहा कि किस तरह से स्थिति होती है कि 1 सेकंड में उस गरीब के सपने चूर हो जाते हैं। उस गरीब के मन में उस समय क्या स्थिति होती होगी। लेकिन कुछ एक बात और मैं कहना चाहता हूं, कुछ लालच भी करा देता है। व्यक्ति के मन में लालच आता है तो वो भी करा देता है। तो लालच को भी हमें रोकना होगा, क्योंकि कभी कभी तो हम वो सीधा सीधा कहते हैं लेकिन हम समझ नहीं पाते, उसका काम नहीं समझ पाते। हमारा काम समझ में आता है कि हाँ ये हमें लालच दे रहा है तो इसमें हमें आ जाना चाहिए। हमें जनता को इससे भी सावचेत करना चाहिए कि किसी तरह के लालच में नहीं आना है। ऑनलाइन ठगी, डेटा चोरी, फर्जी लिंक, साइबर बुलिंग और डिजिटल धोखाधड़ी वे आज की सबसे बड़ी चुनौती हैं। एक बुजुर्ग को फोन आता है और वो अपनी जीवन भर की जमा पूंजी चंद मिनटों में गवा देता है। एक महिला को डिजिटल माध्यम से परेशान और प्रताड़ित किया जाता है। एक युवा लालच में आकर किसी साइबर जाल में फंस जाता है और वो आजीवन परेशान रहता है। ऐसे में सबसे पहली और सबसे बड़ी जरूरत है जागरूकता की। और निश्चित रूप से मैं पुनः धन्यवाद देता हूं कि आपने ये पहल की है। वास्तव में आज के समय में अगर कोई ज़्यादा परेशानी में है तो इसको, अगर परेशानी में नहीं है तो सोच करके परेशानी में है। हमेशा वो उसके
दिल में दिमाग में ये रहता है कि कहीं मैं काम तो कर रहा हूं, फोन आया है, इसको उठाऊं या नहीं उठाऊं। अगर आपके मोबाइल में उसका नंबर फीड नहीं है तो कभी कभी मन में आती है। आप किसी मैसेज को देखना नहीं चाहते हैं लेकिन फिर भी देखना पड़ता है, तो हमें सावचेत रहने की आवश्यकता है। जागरूक नागरिक ही सुरक्षित नागरिक है और यही संदेश इस सम्मेलन का मूल है। इसलिए इस आयोजन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। साथियों, हमारी सरकार साइबर सुरक्षा के विषय पर पूरी गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। हम जागरूकता अभियानों के जरिए गांव-गांव, शहर-शहर लोगों तक पहुंच रहे हैं। हम उन्हें बता रहे हैं कि साइबर ठगी से कैसे बचें, अपना डेटा सुरक्षित कैसे रखें, यदि कोई घटना हो जाए तो कहां और कैसे शिकायत करें। हमारा मानना है कि सबसे बड़ी सुरक्षा जागरूक नागरिकता की है। प्रदेश में साइबर अपराधों को नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर R4C की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही हमारी सरकार के द्वारा साइबर अपराधियों पर कठोर कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा रही है। और इसी के तहत मैं आपसे आज कहना भी चाहता हूं कि मुझे आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज, क्योंकि हमारे संजीव प्रकाश जी, माननीय हमारे चीफ जस्टिस साहब ने, ये कार्यवाहक चीफ जस्टिस साहब ने हमसे अभी कहा है, और ऐसा मौका कहाँ मिलेगा जी कि हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश विराजमान हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि मुझे आपको बताते हुए अर्ज हो रहा है कि साइबर अपराधों की रोकथाम की और अधिक प्रभावी बनाने के लिए हम राजस्थान में विशेष साइबर कोर्ट की स्थापना भी करेंगे। यह साइबर सुरक्षा और समावेशी न्याय की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण पहल होगी। ऑपरेशन एंटीवायरस अभियान के तहत हमने बड़ी संख्या में साइबर अपराधियों को पकड़ा और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया। राजस्थान में 3 नए कानूनों को जमीनी स्तर पर लागू किया जा रहा है। इन नए कानूनों के माध्यम से राजस्थान देश में सबसे तीव्र गति से न्याय पहुंचाने वाले राज्यों में से एक बन गया है। हमारी सरकार का संदेश एकदम स्पष्ट और कठोर है कि राजस्थान की धरती पर किसी भी अपराधी के लिए कोई जगह नहीं है, चाहे वो अपराध जमीन पर करे या स्क्रीन के पीछे छुपकर करे। अपराध अपराध होता है और उसकी सजा उसे अवश्य मिलेगी। इसके साथ साथ हम कानूनी प्रक्रियाओं में भी नवाचार लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आज राजस्थान में ई-कोर्ट्स का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। ऑनलाइन मध्यस्थता प्लेटफॉर्म, लोक अदालत का डिजिटल विस्तार, महिला पंचायत स्तर पर सामुदायिक मध्यस्थता, ये सभी उसी सोच के परिणाम हैं। हम चाहते हैं कि न्याय केवल बड़े शहरों की अदालतों तक सीमित ना रहे। हमारी सरकार का मानना है कि चाहे वो एक गरीब किसान हो, एक मजदूर हो, महिला हो, एक दूर दराज के गांव का बुजुर्ग, सबको न्याय मिले। आज इस सभागार में देश के श्रेष्ठ न्यायविद और न्यायकर्ता उपस्थित हैं। आप वे लोग हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन न्याय की सेवा को समर्पित किया है। आप केवल कानून की व्याख्या नहीं करते हैं, आप समाज को दिशा देते हैं, व्यवस्था को संतुलन देते हैं। आप वो स्तंभ हैं जिन पर इस लोकतंत्र की नींव टिकी है। आज इस सम्मेलन में आपकी भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। मित्रों, मैं हमेशा कहता हूं कि आप वो लोग हैं जो लोग आपका अनुसरण करते हैं। मैं पिछले दिनों एक कार्यक्रम में भी गया, वहां भी मैंने कहा था, क्योंकि आपको लोग देखते हैं तो आपका अनुसरण करते हैं। अनुसरण करके उनका मार्ग प्रशस्त होता है। वो एक उस न्याय की तरफ देखते हैं और आप जो कहते हैं उसको वो मानते हैं, क्योंकि समाज में मान्यता है। और आप सही माने में मैं कहूं तो आप राष्ट्र की आत्मा है। आप उन लोगों को जो परेशान, दुखी, प्रताड़ित, उसका न्याय आपके द्वारा जब मिलता है
तो उसके जीवन में संतोष का भाव पैदा होता है और जीवन में उसे विश्वास होता है। और ये अवधारणा आज की नहीं है, चाहे किसी का शासन रहा हो, लेकिन न्याय की अवधारणा, न्याय के प्रति सम्मान, न्याय के प्रति लोगों का भाव और भावना उनके अंदर की आत्मा है, इस बात को जानती और पहचानती है और उसके आधार पर वो विश्वास भी करती है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आपके वर्षों के अनुभव, आपकी गहरी समझ और आपके मार्गदर्शन से इस सम्मेलन में ऐसी नीतियां, विचार उभरेंगे जो आम नागरिक के जीवन को सीधे प्रभावित करेंगे। साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में जो दिशा निर्देश इस सम्मेलन से निकलेंगे, जो विचार यहां साझा किए जाएंगे, वे कानून बनाने वालों के लिए एक मजबूत आधार बनेंगे और साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाने का काम करेंगे। आप सभी की उपस्थिति इस आयोजन को और अधिक गर्मापूर्ण एवं ऐतिहासिक बनाती है। यह सम्मेलन एक ऐसी शुरुआत है जो आने वाले समय में समाज में और बड़ा समावेशी न्याय, सकारात्मक बदलाव लाएगा। साइबर सुरक्षा और समावेशी न्याय, यह हम सभी का संकल्प है। इस संकल्प को पूरा करने के लिए सरकार और न्यायपालिका और समाज तीनों को मिलकर काम करना होगा। अंत में एक बार पुनः मैं माननीय हमारे मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति न्यायाधिपति श्री सूर्यकांत जी और यहाँ उपस्थित सभी को मैं पुनः सभी विद्वान जनों को हृदय की गहराइयों से आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी उड़ान 2.0 रालसा के तहत कुछ खेल प्रतियोगिताएं हमने आयोजित की थी, तो उनके विजेताओं को बुलाना चाहूँगा। चूंकि थोड़ा समय कम है हमारे पास, तो मैं चाहूँगा कि टीम कबड्डी छात्राओं की एक साथ मंच पे पधारे और डाइस से निवेदन करूँगा कि डाइस आप थोड़ा सा आगे आएँ प्लीज़। ये बच्चे विशेष योग्य जन हैं। डाइस में आपसे निवेदन करूँगा कि आप थोड़ा सा आगे पधारें। ये बच्चे विशेष योग्य जन हैं। हम इसे थोड़ा शीघ्र करेंगे, तो मैं अब निवेदन करूंगा कबड्डी की जो छात्रों की टीम है वो तैयार रहे। बच्चे थोड़ा शीघ्र करेंगे और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये बच्चे विशेष होकर जिन्हें तालियां कम नहीं होनी चाहिए यार, मेरा आपसे निवेदन है। पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल। बच्चे थोड़ा जल्दी करेंगे आप सभी। नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाए तारे ज़मीं पर। ये तो है सर्दी में धूप की किरणें, उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने। आदरणीय मंच, मैं चूंकि समय कम है तो मैं चाहूंगा कि आप सभी मिलकर के बच्चों को एक साथ ही कर दें, जिससे कि हमारा थोड़ा समय हमारा बच जाएगा। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप सबको सर को दें अपने हाथों से, आप आगे दें। जी हाँ, कबड्डी के बच्चे तुरंत आगे आ जाएं।
जैसे आँखों की डिबिया में निंदिया और निंदिया में मीठा सा सपना और सपने में मिल जाए फरिश्ता सा कोई जैसे रंगों की लॉन्ग जंप के छात्र और छात्राएं भी आगे आ जाएं। फूलों की क्यारी जैसे बिना मतलब का प्यारा रिश्ता सब एक साथ आगे तक आ जाएं, आगे तक आ जाएं, जिससे कि हमारे इंटरप्रेटर आप प्लीज उनको बताएं कि तारे ज़मीन पर आप थोड़ा जल्दी करें। मैं आपसे निवेदन करूंगा इंटरप्रेटर साहब, थोड़ा जल्दी करने दें प्लीज। हाँ। ये बच्चियां विशेष हैं, आप देखें, आप इनकी हौसला अफजाई के लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ऊपर से भी तालियों की आवाज आए और नीचे से भी। ये मंच सभागार में तालियों की आवाज थोड़ी जोर से हो, इनके बच्चों के हौसलों को सलाम करते हुए। इनके भी सपने हैं, इनकी भी उम्मीदें हैं और एक दिन ये भी कुछ बड़ा काम करेंगे। इसी विश्वास के साथ हमें इनकी हौसला अफजाई करनी होगी। कृपया कैरम के विजेता बच्चे भी आगे आ जाएं मंच पर। कैरम और चित्रकला में विजेता रहे बच्चों से अनुरोध है कि वह भी मंच पर पधारें। और उसके साथ साथ बोची बॉल की छात्राओं और छात्र भी आगे आ जाएं। आप सभी बच्चों से अनुरोध है कि कृपया एक साथ मंच पर पधारें। अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर खो न जाएंगे तारे ज़मीन पर। जी, गर्वित मंत्री, ये बहुत ही होनहार बच्चा है। ये आदरणीय मंच 3 बार हमारे समक्ष आएंगे, आपके समक्ष आएंगे। ये इनकी माता जी हैं जो बड़े उत्साह से इनको लेकर के आती हैं। देखिए, माँ का यही माँ का प्यार होता है। मैं चेस के बच्चों के लिए भी निवेदन करूंगा कि वो आगे आए। रंगत बदल दे खो न जाएंगे। उसके पश्चात टेबल टेनिस और फिर अंत में ड्राइंग के बच्चे, आप भी आगे आ जाएं। मैं माफ़ी चाहूँगा बच्चों आपसे कि थोड़ा समय हमारे पास कम रहा, इसलिए थोड़ा जल्दी करके मैंने आपको बुलाया है, वरना मैं आपको सबको एक एक करके इंडिविजुअल बुलाता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको हमारी तरफ से। टेबल टेनिस और ड्राइंग के बच्चे, बहुत 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 धन्यवाद आपका, सम्मानित मंच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। In the context of today's theme, the Honorable CGI has been a vocal proponent of using technology to bridge the justice gap. इस बच्चे के हौसले को सलाम जरूर कीजिएगा तालियों से, जिसने बच्चे ने इतनी हिम्मत दिखाई है कि हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री साहिबा से मिलने के लिए वो गए हैं। और उप मुख्यमंत्री साहिबा, आपका भी बहुत बहुत आभार कि आपने बच्चे से बातचीत की है। Coming back, in the context of today's theme, Honorable CJ has been a vocal proponent of using technology to bridge the justice gap. He believes that law should not just be found in thick books but should be accessible via a click, ensuring that no citizens' rights are languished.
due to procedural delays. As we stand at the intersection of cyber safety and access to justice, there is no one better equipped to guide us than the man who is leading the digital transformation of Indian legal system. With deepest respect and resounding round of applause, I most humbly request the Honorable Chief Justice of India to grace the podium and share his visionary thoughts. May I request the House to please rise as we welcome the Honorable Chief Justice of India. Shri Bhajanlal Sharma ji, Honorable Chief Minister of Rajasthan, my esteemed colleagues from the Supreme Court of India, Justice Ehsanuddin Amanullah on the dais, Justice Rajesh Bindal, Justice Prasanna Barale, Justice M. Koteshwar Singh, respected Diya Kumari ji, Shri Premchand Bhairwa ji, Honorable Deputy Chief Ministers of State of Rajasthan, Justice Sanjeev Prakash Sharma, Honorable the Chief Justice Acting Rajasthan High Court and Executive Chairman of the State Legal Service Authority, Justice Dr. Pushpender Singh Bhati, Judge Rajasthan High Court and Chairman of the High Court Legal Service Committee, distinguished sitting and former judges of the High Court of Rajasthan, judges and senior judicial officers of the participating high courts in this national conference, learned Advocate General and Chief Secretary, learned Director General of Police, Civil and Police Department and other senior officers of the Government of Rajasthan, Registrar General and other judicial officers of the Rajasthan High Court, Member Secretary, officers and functionaries of the Rajasthan State Legal Service Authority, District Legal Service Authority, various other legal institutions, leading academic scholars, technological experts and resource persons, domain experts who are present here to enlighten us in this 3 days conference, members of the district judiciary, my dearest bravo students, friends from media, ladies and gentlemen, a very good evening. My sincere apology for delaying this program. I got stuck in my some official responsibilities in Delhi, couldn't reach on time. I am apologetic to all of you. But before I begin to share my views on this very contemporary, a very important subject of this 3 days conference, I would like to express my thanks and gratitude to Honorable Chief Minister of Rajasthan for announcing the establishment of cyber courts. I also congratulate the High Court of Rajasthan and the State Legal Service Authority for launching various schemes or publishing the relevant material as a measure of access to justice for the common man. It gives me immense pleasure to be here in the inaugural session of this National Conference on Cyber Safety, Awareness, Protection and Inclusive Access to Justice. The learned Executive Chairman, his entire team in the State Legal Service Authority deserves congratulations for convening this timely and necessary dialogue, for placing cyber safety where it belongs. And in my words, the cyber safety is at the heart of the justice conversation. The fact that this is not a one-day event, but there are deliberations for 3 days, is itself a statement of seriousness and the importance that has been given to this theme. All of you will remember, हम सबको बचपन में बताया, पहले सोचो
फिर बोलो, पहले समझो और फिर चलो। Think before you speak, understand before you act. In the digital world, where decisions are made in a click and harm can travel to the speed of light, this simple discipline becomes a form of protection. Cyber safety, at its core, is nothing but the modern expression of that very same old wisdom which I just shared with you. So, act with awareness, protect with care, and never assume that what happens familiar is necessarily safe. We often speak of cybercrime in the language of anecdotes. A fraudulent call, a stolen OTP, a manipulated video, Justice Bhatti gave so many illustrations, and a digital arrest scam. आप सबको मालूम है, डिजिटल अरेस्ट पर मैंने जुडिशियल नोटिस लिया सुप्रीम कोर्ट में, और जब मेरे पास एक बुजुर्ग दंपत्ति का कंप्लेंट आया कि उनकी सारी उम्र की कमाई जो थी उसको 1 सेकंड्स में लूट लिया गया, तो मैंने उस पर एक सो मोटो संज्ञान लिया, उसको रजिस्टर किया, और मैं उसको अभी भी मॉनिटर कर रहा हूँ। और मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है, जो मैंने पिछली बार कई बार बहुत सारे सख्त ऑर्डर उसमें पास किए हैं, that whatever role the judiciary can play in getting this menace out of the country, we will not leave any stone unturned. Justice Bhatti also explained to you the facts and figure that how the cyber crime is increasing so alarmingly. Lakhs of cases you have, more than 50,000 crore rupees have already been looted. That's the word I last time used in court, that it's a clear case of extortion and dacoity if the money has gone like that. The Ministry of Home Affairs has also come out with a very alarming data and figures. More than almost 66 lakhs cyber fraud complaints are now pending in this country. Cyber fraud, therefore, is no longer a marginal problem. It is a mass phenomenon that is engaging global attention. As Dr. Bhatti explained to you that recently when I organized the Commonwealth Judicial Educators Conference, and before that I was invited in Paris and in other some international platforms. Now this is becoming a very serious subject of discussions and deliberations, because cybercrime has no geographical barriers. It doesn't have any limitations. It's very difficult to find out the place where it opens and where it culminates into committing the crime. So unless you have a coordinated effort, a system which is based upon collaboration, cooperation, it's very difficult to find out the people. I can give you one small example of mine own. Every alternate day I find that there is new site created in my name. So one or the other well-wisher will send on my mobile that look here, now be warned that this site has again been opened in your name. And since some of the recent photographs are available in public domain, they will all fit in well there. Not only this, and then those sites are used to send different kind of messages. This I know personally, this has happened with me. In fact, on one of the day, my sisters and my young lawyers like my daughters, they received a message from one of the sites created in my name. Fortunately, the language was respectful, there was no offending language. Probably they knew my moral authority and they knew my fear also, that I will not be able to spare them in case I find that. And eventually then I immediately instructed the cybercrime police authorities to find out something. Unfortunately, what's happening is all those sites are being generated from Nigeria. Now this is the complexity of this offense when we talk about it. So I was wondering that why the State Legal Service Authority, which has a command, a responsibility or a duty assigned within the framework of
as we normally call under Article 39A of the Constitution, that you will provide free legal aid and access to justice on socio-legal issues, I was wondering that why the State Legal Reserve Authority has picked up a subject which ordinarily should be a subject concern of the cybercrime bureaus or the expert police agencies, or maybe of course the other law enforcing agencies. But I can answer this with confidence. It's only because the cybercrime is not merely a technological offense. It represents a barrier to justice at the most fundamental level. And when there is a barrier to the delivery of justice, our stakeholders, legal service authority being the prime representative, it becomes our foundational duty to come forward and extend our helping hand to the people. Let's be very clear. When an elderly citizen loses lifelong savings to an impersonation scam, the injury is not financial only. It is emotional, it is social, it is institutional. When a deepfake video destroys a person's reputation, the harm is not merely online. It touches one's dignity, safety, livelihood, and often the courage to even approach authority. Therefore, in this era of digital age, we must be honest enough to recognize that technological vulnerability as a disability of access. A citizen who cannot navigate reporting portals, who cannot distinguish a legitimate notice from a fake summons, or who is intimidated by language of cyber procedures, is effectively excluded from justice. I therefore again congratulate the State Legal Service Authority that for taking this initiative and making an attempt to bring at least the procedural safeguards which can be, as of now, adopted by the citizens to protect themselves from this kind of heinous crime. That's why I admire that the conference theme has also been chosen by them. Moving forward, when we look beyond individual incidents, we begin to see a broader concern emerging. The digital revolution has undoubtedly brought unprecedented convenience. माननीय मुख्यमंत्री जी ने कितनी बातें बताई आपको, डिजिटल वर्ल्ड से कितनी हमारी जिंदगी में सुधार हुआ है, कितनी ऐसी सुविधाएं हैं जो आम आदमी को बहुत आसानी से उनके द्वार तक पहुंचती हैं। जैसे न्याय प्रणाली में हम न्याय आपके द्वार की बात करते हैं, डिजिटल वर्ल्ड की डिजिटल सहायता के माध्यम से अगर सरकारें गरीब आदमी को उनके लाभ, उनकी जो उनके अधिकार हैं उनको पहुंचाने में अगर सक्षम हुई हैं, तो ये डिजिटल टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही बड़ा सदुपयोग है। बट द ओनली कंसर्न इज दैट व्हेन इट स्टार्ट्स बिकम अनरूली हॉर्स, then how to control it and how to prevent the consequences when the people start misusing that very technology for committing the very sophisticated kind of crimes. And this larger pattern I want to flag only to remind you that what is at stake in the battle against cyber crime is not the trust in the judiciary alone. As you all would agree, the rule of law itself rests upon predictability. Citizens must know where they stand. They must believe that institutions are real, accessible, and reliable. But when digital deception becomes widespread, there is no predictability, it gets eroded. And when manipulated images and fabricated voices circulate freely, the first casualty is what? Truth itself becomes contested. In such an environment, cyber safety is not only about protecting bank accounts, it is about preserving institutional trust. Without trust, even the most sophisticated justice system begins to weaken. The task before us, ladies and gentlemen, is to ensure
that technological progress does not create a climate of silent anxiety. It is my belief that no discussion on cyber safety can ignore the rapid rise of artificial intelligence in the past few years. The recent landmark Global AI Summit recognized the world-altering ramifications of modern technology. AI today powers fraud detection systems, financial systems, digital governance platforms, and communication tools. It has the capacity to assist justice by accelerating research, improving translation, and detecting suspicious patterns. In fact, I am one of those who have very vocally supported the use of AI in the justice delivery system to the extent it can help in procedural speedy system. Of course, I have been putting a caveat that as far as the decision-making process is concerned, that should be based upon the complete human approach, and that is the job solely assigned as a divine duty to the judges to perform. But AI can be a game changer. It can be a very helping and powerful tool for speedy disposal of the matters, for providing access to justice, for providing an affordable justice system. As Honorable Chief Minister also pointed out, that now you have virtual courts, you can file cases while sitting at home, you can find the status of your case while sitting at home, and you can even watch the proceedings, you can appear and you can argue your matters while sitting at home. Artificial intelligence magnifies intention, whether benevolent or malicious. That is what the question mark ultimately compels us to have this kind of deliberations as we propose to have in this conference. It is therefore not enough to ask whether technology is innovative. In this digital sphere, there is a dire need to cultivate ethical restraint. Regulations must be agile and institutions must be vigilant. As I have said on numerous occasions in the past also, technology should assist justice. It must never intimidate or replace justice. It is in this backdrop that this conference assumed profound significance. I welcome the range of initiatives being launched today by the State Legal Service Authority umbrella. I am particularly encouraged that the State Legal Service Authority is not limiting its response to advisory messages only, rather it's building institutional pathways. The cybercrime redressal initiatives, which so many today have been launched, represent the move from intention to infrastructure. For a system becomes real only when it becomes reachable. And if a victim is compelled to travel through a maze of offices and procedures, justice has already become elusive for him. Equally significant is the emphasis on the educational ecosystem. The launch of the awareness campaign of schools and the booklets speaking to the young citizens, I think those are all remarkable. If we want long-term cyber safety, we must stop treating it as a post-crime intervention, rather start treating it as a civic education. The other initiatives too are of equal importance, and I'm quite sure that those will be very helpful to the citizenry, to the general public, particularly in the state of Rajasthan, and I believe that the State Legal Service Authority will ensure that not only in the Hindi भाषा लोकल, मैं बार बार बात बोलता हूँ कि लोकल डायलेक्ट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मीडिएशन में खासकर मैंने बात हर जगह कही है कि जब तक आप उस आदमी की ज़ुबान को नहीं समझोगे और उसकी भाषा में, उसके शब्दों में जब तक आपका मीडिएटर बात नहीं करेगा, आपका मीडिएशन सफल नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि अगर साइबर क्राइम के बारे में भी हमें अगर अपनी जनता को, अपने परिवार को, अपने आसपास को, अपने पड़ोस को, अपने शहर को, गांव को, मोहल्ले को, अगर उसको हमें उसके बारे में जागरूक करना है तो ये इतना आवश्यक है कि हम उसी की भाषा में बोलें और उसी की भाषा को समझें। न उसके ऊपर ये भार आना चाहिए कि वो हमारी भाषा सीखे और हमें बताए, और न हमारे लिए अपवाद होना चाहिए। हमें उन्हीं की भाषा में समझना है और उसी की भाषा में उनको बात करना है। The solutions therefore, I am quite sure that will be
emerging in this 3 days conference will be quite practical, collaborative and sustained. Since cybercrime is adaptive, our institutional response must be swiftly adaptive as well. Banks, law enforcement agencies, technological platforms, courts and legal service authorities all must function not as isolated silos but in lockstep as coordinated partners. I am reminded of the immortal words of Sir C.V. Raman, and he has beautifully said, and I quote him, "The essence of science is independent thinking, hard work and not equipment." And that is what, when you understand this statement, it is a deceptively simple insight, but one that carries profound relevance for our own time when we are discussing, understanding and facing the challenge of cybercrime. In this digital age, we are often dazzled by equipment, but the sophistication of digital processes, the scale of data networks, the speed of artificial intelligence, all these things are there, yet technology by itself guarantees nothing. Just as science advances, not merely through instruments, but through disciplined minds, justice in this digital era will not be secured merely through software, surveillance systems, or regulatory frameworks. It will be secured through clarity of thought, ethical restraint, and institutional vigilance. Ladies and gentlemen, if you cultivate that discipline, if you ensure that independent thinking guides innovation, that accountability tempers ambition, and that the most vulnerable citizens remains at the center of our design, then the digital republic will not weaken the rule of law, rather it will strengthen it. Let this conference mark that commitment. Let it affirm that India technological advancement will always remain subordinate to constitutional values, and we will continue to have constructive, optimistic, positive utilization of the e-technology by ensuring that it does not result into multiplied cyber frauds, crimes against our citizenry, against our innocent citizen. Let us deliberate and find out all those solutions in this conference. My best wishes to the participants, to the domain experts, to the subjects experts who are here to guide us. All my best wishes to the State Legal Service Authority, to the High Court of Rajasthan, and to the state government for organizing this event. I am extremely thankful to Honorable the Chief Minister, the state government, the Acting Chief Justice, Rajasthan High Court, and all of you for giving me this opportunity to share my views. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, Lordship. Thank you very much. Thanks from our side, and also thanks from the Aravali Parvatmala. With profound respect, we now proceed to the presentation of mementos as a mark of our gratitude and reverence towards our distinguished guests. I most respectfully invite Honorable Mr. Justice Sanjeev Prakash Sharma Saab, the Acting Chief Justice of Rajasthan High Court, to kindly present the memento to Honorable Mr. Justice Suryakant Saab, the Chief Justice of India, whose illustrious leadership of the Indian judiciary continues to strengthen constitutional governance and the rule of law. We humbly request His Lordship to graciously accept this memento as a token of our deep respect and appreciation. May we have a big round of applause. May I respectfully invite Honorable Dr. Justice Pushpendra Singh Bhati Saab to present a memento to Honorable Shri Bhajan Lal Sharma Saab, Honorable the Chief Minister of Rajasthan, whose visionary leadership and dedicated service guide the progress and welfare of the state. We most respectfully request him to kindly accept the memento. I invite Honorable Mr. Justice Vineet Kumar Mathur Saab
Judge, Rajasthan High Court, to kindly present the memento to Honorable Mr. Justice Ahsanuddin Amanullah Sahab, Judge, Supreme Court of India, whose judicial wisdom and contribution to constitutional jurisprudence are deeply valued. We humbly request His Lordship to accept the memento. May I request Shri Chanchal Mishra, Registrar General, Rajasthan High Court, to kindly present the memento to Honorable Mr. Justice Sanjeev Prakash Sharma Sahab, Acting Chief Justice, Rajasthan High Court and Executive Chairman, RSLSA, whose stewardship and commitment to access to justice greatly strengthen the judicial system of the state. We respectfully request His Lordship to graciously accept this token of appreciation. Now I invite Shri Hariom Atri, Member Secretary, RSLSA, to present a memento to Honorable Dr. Justice Pushpendra Singh Bhati Sahab, whose dedication to justice delivery and legal aid and initiatives is sincerely admired. We humbly request His Lordship to kindly accept the memento. May I respectfully invite Honorable Mr. Justice Inderjeet Singh, Judge, Rajasthan High Court and Chairman, RSLSA Jaipur, to present a memento to Honorable Mr. Justice Rajesh Bindal Sahab, Judge, Supreme Court of India, whose distinguished judicial service commands nationwide respect. We most respectfully request His Lordship to kindly accept this memento. May I now invite Honorable Mr. Justice Mahendra Kumar Goyal, Judge, Rajasthan High Court, to present a memento to Honorable Mr. Justice Prasanna Bhalachandra Varale Sahab, Judge, Supreme Court of India, whose contribution to the development of jurisprudence enriches the constitutional framework of our nation. We respectfully request His Lordship to kindly accept this memento. I invite Honorable Mr. Justice Farzand Ali, Judge, Rajasthan High Court, to present a memento to Honorable Mr. Justice N. Kotishwar Singh Sahab, Judge, Supreme Court of India. We humbly request His Lordship to graciously accept this token of appreciation. May we have a round of applause, please, ladies and gentlemen. I invite Shri Ajay Singh, Registrar cum Principal Secretary to Honorable Chief Justice, to present the memento to Ms. Diya Kumari, Honorable Deputy Chief Minister of Rajasthan, whose commitment to governance and public service reflects dedication to the welfare of the people. We respectfully request her to graciously accept this memento. I invite Shri Neeraj Kumar Bharadwaj, Director RSLSA, to present the memento to Dr. Premchand Bairwa, Honorable Deputy Chief Minister of Rajasthan, whose service to the state is sincerely valued. We humbly request him to accept this memento. I now invite Shri Yogesh Sharma, Joint Secretary, Rajasthan State Legal Services Authority, to present a memento to Shri Jogaram Patel, Honorable Law Minister, Government of Rajasthan, whose leadership in legal and legislative affairs strengthens governance and justice delivery. We respectfully request him to graciously accept this memento. And we also thank you, sir. Thank you for coming. We extend our heartfelt gratitude to all our distinguished dignitaries for honoring this occasion with their esteemed presence. Every meaningful gathering concludes with an expression of gratitude, and now it's time to formally acknowledge whose presence and efforts made today's evening successful. I invite Shri Hariom Atri, Member Secretary RSLSA, to kindly deliver the vote of thanks. Honorable Mr. Justice Suryakant, Chief Justice of India, Honorable Shri Bhajanlal Sharma, Chief Minister Rajasthan, Honorable Mr. Justice Ahsanuddin Amanullah Sahib, other Honorable Judges of Supreme Court of India, Honorable Acting Chief Justice Rajasthan High Court, Mr. Justice Sanjeev Prakash Sharma Sahib,
other honorable judges of the Rajasthan High Court, and distinguished dignitaries present of the dais. It is my profound privilege on behalf of Rajasthan State Legal Service Authority to propose the vote of thanks at the conclusion of this distinguished inaugural session. This evening has indeed been both momentous and deeply inspiring, setting the tone for meaningful deliberation in the days ahead. We are profoundly honored by the gracious presence of Honorable the Chief Justice of India, Mr. Justice Surikant. His august presence and visionary address have elevated this gathering and imparted clarity of purpose to this conference. Despite the onerous responsibilities of his accelerated constitutional office, His Lordship visit to inaugurate this program reflects a deep and abiding commitment to strengthening access to justice and promoting people-centric legal reforms. For this invaluable encouragement and guidance, we offer our most respectful and heartfelt gratitude. राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा साहब का भी हार्दिक आभार व्यक्त करती है, जिन्होंने अपनी गरिमामयी उपस्थिति से इस अवसर की शोभा बढ़ाई। साथ ही माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी एवं श्री प्रेमचंद बैरवा का भी हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। माननीय विधि मंत्री श्री जोगाराम पटेल साहब का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। उनकी उपस्थिति न्यायपालिका और कार्यपालिका के संबंधित प्रयासों का प्रतीक है, जो जन कल्याण एवं न्याय सुलभता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशगण के प्रति भी अपनी गहन कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। उनकी उपस्थिति इस सम्मेलन को विशेष गरिमा, गंभीरता और बौद्धिक गहराई प्रदान करती है तथा आगामी सत्रों में उनके मार्गदर्शन की हम अपेक्षा करते हैं। मैं मंचासीन न्यायाधिपति श्री एहसानुद्दीन अमानुल्लाह साहब के प्रति अपनी विशेष कृतज्ञता प्रकट करता हूं कि वे राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में न सिर्फ हमें दिशा निर्देश प्रदान कर रहे हैं, बल्कि व्यक्तिगत स्तर पर हमारे साथ इंटरेक्ट करके और हमें निर्देशित करते हैं कि हम नवीन नवाचार जन साधारण के लिए कर पाएँ। The initiative launched this evening reaffirm our collective resolve to translate constitutional ideas into tangible realities for every citizen. These progressive initiatives could not have been conceived or materialized without proactive support of our Registrar General, Shri Chanchal Mishra Sahib. RSLSA remains firmly committed to complementing and strengthening the transformative momentum being brought to the digitization of judicial redressal process by Registrar General Shri Chanchal Mishra ji under the leadership of our Honorable Acting Chief Justice. मैं पुनः माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने साइबर सम्मेलन एवं साइबर संरक्षण योजना की अभिनव संकल्पना प्रस्तुत की, जिसके अंतर्गत RSLSA एवं जिला स्तर पर विशेष साइबर इकाइयों की स्थापना की गई है। आगामी 2 दिनों में होने वाले विचार विमर्श निश्चित रूप से साइबर अपराधों में समाज की सुरक्षा हेतु ठोस दिशा प्रदान करेंगे। मैं रजिस्ट्री की समस्त टीम के प्रति इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूं। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण इस 3 दिवसीय सम्मेलन में सहभागिता करने वाले सभी गणमान्य व्यक्तियों का आभार व्यक्त करती है। उनका सक्रिय सहयोग एवं सहभागिता प्रौद्योगिकी आधारित अपराधों से निपटने की दिशा में एक समग्र दृष्टिकोण विकसित करने में सहायता प्रदान करेगी। अंत में, यदि हमारे सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद किसी भी माननीय अतिथि को कोई असुविधा हुई हो, तो मैं विनम्रतापूर्वक क्षमा प्रार्थी हूं और आपकी उदारता की अपेक्षा करता हूं। आप सभी के प्रति अपनी गहन कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मैं इस धन्यवाद ज्ञापन को समाप्त करता हूं। आपको धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमसे एक मैं निवेदन करूंगा, आई रिक्वेस्ट यू श्री हरिओम अत्री सर टू प्लीज फेलिसिटेट श्री वी श्रीनिवास, चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। हमसे ये रह गया था, जिसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। Thank you very much, sir. Now with this, we come to an end of the program. Now we'll sing national anthem. मैं चाहूँगा कि आप राष्ट्रीय गान के सम्मान में खड़े हुए और उसे गाकर भारत के प्रति और अपने प्रति गौरवान्वित महसूस करें। जन गण मन अधिनायक जय हे।
भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Thank you very much. Now we proceed for dinner, and before that we'll have group photographs. So may I request Rashmi ji to please announce the schedule. I will request everyone to please be seated till the time dignitaries leave the hall. पहला तो ये है सर ऑनरेबल जजेस ऑफ राजस्थान आप बोले थे ना बोल रहे हैं फोटो कौन किसके साथ क्या मैं समझ नहीं पा रहा जी 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 एंड सुप्रीम कोर्ट आल्सो नहीं तो मैं समझा नहीं तो जाएंगे तो ये ना हाँ मैं निवेदन करूंगा ऑनरेबल judges of Supreme Court and Rajasthan High Court to please come for a group photograph with Honorable CJI, Honorable CM, Deputy CM. जी, outside at gate number 2, B block. जी, Honorable CJI, Honorable Chief Minister Sahab, Deputy CM Sahabs, Madam and Sir, along with Honorable Supreme Court and Honorable High Court judges to have a group photograph, please. आप बाकी सभी से मैं निवेदन करूंगा कि अपने स्थान पर बैठे रहें.